Ielts listening module. Yes, that's a module in which you can get 9 bands, and it's pretty simple. What will be your reaction if I say that you can achieve 9 very easily? In this video, I'm gonna share with you some of the very practical tips and tricks with which you can score 9. I followed them and I got 9 bands, and that was pretty easy for me. So now, not wasting the time, let's start it. 1, 2, 3, come on! So guys, जब भी आप अपने टीचर को पूछते होंगे कि सर हमारा बैंड कैसे इंक्रीज होगा इन लिसनिंग, हाउ वी कैन इंक्रीज आवर बैंड, सो मोस्ट कॉमन आंसर इज दैट मूवीज देखिए, सबटाइटल्स के साथ मूवीज देखिए और उससे आपके बैंड्स बढ़ जाएंगे. I tried it a lot. I tried it, but nothing increased. There was no improvement. My problem was that whenever I used to watch movies with subtitles, I used to get bored. It was really tough to watch the movie as well as read the subtitles. It was really difficult for me, but as I was very dedicated towards my IELTS, so I did that for a long time, but I did not get even a single step up. So I thought that it's not working. I again asked my teacher that what should I do now? I'm not getting bands, and I'm not able to practice this. Watching a movie and reading the subtitles, I'm not even getting. मुझे ना तो मूवी की समझ लगती है, ना ही मुझे कुछ वहाँ पे क्लियर लगता है. I'm getting bored by that. So after that, I explored a lot and I got a result. तो रिजल्ट क्या था? रिजल्ट ये था कि हमें कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है. कोई भी ऐसी मूवी देखने की ज़रूरत नहीं है विद सबटाइटल्स, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स इवन इंक्लूडिंग मी, मैं बोर हो जाता हूँ. या तो मूवी देख सकता हूँ या मैं रीड कर सकता हूँ. आई कैन डू वन थिंग एट अ टाइम. सो आई केम ऑन टू द कंक्लूजन दैट कि कुछ ऐसा देखा जाए जिसमें मेरा इंटरेस्ट हो और डे टू डे कन्वर्सेशंस की बातें हो, क्योंकि मूवीज़ में तो क्या होता है, मूवीज़ में तो सब चीज़ें फैंटेसी होती हैं. फैंटेसी, दे आर नॉट द डेली रूटीन थिंग्स, दे डू नॉट यूज द वर्ड्स विच वी यूज इन आवर डेली रूटीन. सो इट वाज ऑल वेस्ट. So I came on the decision that I should explore the different videos by listening to which I will get benefits. तो मुझे क्या लगा, मैंने अपने इंटरेस्ट फॉलो किए कि मुझे क्या इंटरेस्टिंग लगता है. सो आई गॉट ऑन अ रिजल्ट दैट आई शुड लिसन टू द सेलिब्रिटीज टॉकिंग टू ईच अदर. पहले मैंने इंटरव्यूज देखने स्टार्ट किए. आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ संजय दत्त. सो मैंने उसकी वीडियोस देखी, उनकी मैंने इंटरव्यूज देखी, दैट्स इन इंग्लिश. उससे क्या होगा कि जब आप बॉलीवुड एक्टर्स की इंटरव्यू देखेंगे, बाय दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट वेरी क्लियरली. क्योंकि कुछ हॉलीवुड एक्टर्स ऐसे हैं जिनका एक्सेंट, जिनका वे ऑफ स्पीकिंग टोटली डिफरेंट है, इसीलिए हमें उनकी जो लैंग्वेज है वो नहीं समझ लगती. इट्स प्रीटी ईजी, इट्स प्रीटी गुड टू स्टार्ट फ्रॉम बॉलीवुड एक्टर्स. जस्ट वॉच देम, listen them that what they are speaking, but in English. After that, I am a foodie, so I started exploring the channels which were reviewing the foods but in English language. So I got many results and I started watching them. They were using the words which were used in our daily routine. They were interacting with the people and I started catching the words. That worked with me, due to which I got my desired band. So guys, the conclusion is that just explore yourself. अपना interest देखो कि किस चीज़ में. If you are a foodie, just start watching the videos on YouTube that review the food, different kind of food, but in English. Do not watch any video in Hindi or any other language. Okay, if you are depressed, start watching motivational videos, but in English. Okay, in English. That's the only way to engage yourself in the video, and by that you will get benefits. अगर आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो कोई चीज़ देखने में, तो आप उससे बेनिफिट्स कैसे ले सकते हो? कोई ऐसी चीज़ देखो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो और उसकी लैंग्वेज इंग्लिश हो. बाय दैट ओनली यू विल गेट बेनिफिट्स. और देखनी कब है? देखनी कब है? Whenever you are eating
something, whenever you are having food, whenever you are doing yoga, whenever you are going out, whenever you are traveling, just watch these kind of videos. इससे क्या होगा कि एक तो आपका टाइम सेव होगा, अगर आपके पास कोई फ्री टाइम है उसमें ये वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आप कोई बहुत सारे अलग काम कर सकते हो। जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो उस वक्त ये वीडियोस देखिए, जब भी आप कुछ फूड खा रहे हो उस वक्त ये वीडियोस देखिए, दैट विल इंक्रीज द टेस्ट एज वेल। मैंने खुद ये ही ट्रिक किया, मैं जब फूड खाने बैठता था तब मैं ये वीडियोस देखता था, दैट मेक्स माई फूड डिलीशियस एंड इवन आई अंडरस्टूड सम ऑफ द वर्ड्स दैट हाउ दे प्रोनाउंस देम। सो गाइज, start doing this and I hope that you all will get benefits, and comment me that if this trick is beneficial for you or not. So guys, I also want to convey you that इसमें जो benefits हैं that are not short term benefits नहीं होते। ऐसा नहीं होगा कि 10 दिन में आपको benefits दिखने के लिए, 5 दिन में benefits दिखेंगे। No, you will have to work like this for at least 15 days. You will definitely get benefits, you will definitely get results, you will definitely start getting results after 15 days. Okay, if you got the results, just comment below. Okay, now here I end up with this video, guys. I hope you enjoyed it. Thanks a lot for watching me. Meet you in the next video.